Hello friends, welcome to all of you. In this today's session, we'll continue the exercise. The last part, we have to take question number 9 as we have completed till 8th question, and now I will continue with question number 9. Students, ये जो मैं 9 क्वेश्चन अब ले रहा हूं, इट्स स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वेश्चन. उसका जो सॉल्व करने का जो नेचर है, that you have to understand first. So please mark it important as this 9th question जो टाइप के हिसाब से हम उसको कर रहे हैं, जिस टेक्निक से हमें उसको करना है, from that angle I am saying it is very very important. So very first let me specify what is given. First there is an instruction, find the value of in which number 1 x cube minus x square plus x plus 46 if x is equals to 2 plus 3i. Now student, this is important to understand the nature of the question, and the pattern in which the solution is to be performed is also very much important. स्टूडेंट, पहले तो आप जान लीजिए क्वेश्चन किस तरह से हमें प्रेजेंट किया है, एंड यू नीड टू आइडेंटिफाई दिस पर्टिकुलर टाइप व्हेनेवर दे आस्क इन द एग्जाम्स. हमें इसका जो स्ट्रक्चर है इसको हमें समझना है. दे विल आस्क अस टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, जिसमें कि क्यूब भी है, स्क्वायर भी है. Maybe it has higher order power, क्यूब से भी ज्यादा हो सकता है. एंड जिसका हमें वैल्यू फाइंड करना है, जिस टोटल जो मैंने हाईलाइट किया है, उसमें कोई भी इमेजिनरी टर्म नहीं है, यू कैन नोटिस. बट यहाँ इफ करके जो हमें x की वैल्यू प्रोवाइड की है, इन दैट x वैल्यू इट इज कॉम्प्लेक्स नंबर प्रोवाइडेड which is in the form of a plus bi. Are you noticing this particular thing what I am highlighting? जो हमें ये फाइंड करना है वैल्यू, उसमें जो x की वैल्यू हमें लेनी है वो हमें क्वेश्चन में दी है, which is given in the form of a plus bi. तो ये जो है इस टाइप के फॉर्मेट का ये क्वेश्चन है. अब हमें करना किस तरह से है, that we have to understand first. So under solution, first of all, what is the given? x का वैल्यू जो दिया है आपको 2 plus 3i. अब स्टूडेंट, ये जो 2 plus 3i का जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें अवेलेबल किया है, इसमें हमें कुछ मॉडिफिकेशन करने हैं. नाउ व्हाट टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन इज रिक्वायर्ड एंड व्हाट इज आवर एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट? लेट मी एक्सप्लेन. फर्स्ट ऑफ ऑल, in this you take real terms at one place, one side. That means x और 2 जो रियल टर्म्स है, इसको आप एक साइड रखने हैं. मतलब कि इसको चाहिए तो आप लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, और अपोजिट साइड जो राइट हैंड साइड रहा, उसमें सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी टर्म होना चाहिए.
imaginary number होना चाहिए. So what we can do, this can be written like this: x minus 2 is equals to 3i. Yes or no? So real numbers एक साइड आ गए हैं, लेफ्ट हैंड साइड, एंड imaginary number, only imaginary number remains and in the opposite side, that is right hand side. Now we have to square both the sides. Squaring both sides. Squaring both sides. So what is the purpose behind squaring both sides? Let me explain. This represented as x minus 2 whole square is equals to 3i whole square. देखो स्टूडेंट, स्क्वायर करने के लिए हमारा इंटेंशन ये है कि जैसे कि ये तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों रियल टर्म का होल स्क्वायर हो गया, दिस कैन बी एक्सपांडेड विद द होल स्क्वायर फॉर्मूला एज यू नो. Or you can have expansion directly also without showing this particular step. Very importantly, right hand side में 3i का whole square, that becomes 9i square. 9i square. So this becomes x square minus 4x plus 4 is equals to 9i square के जगह पे -1. I square is equals to -1. And hence this becomes x square minus 4x plus 4 is equals to -9, which becomes x square minus 4x plus 4 plus 9 is equals to 0, which becomes x square minus 4x plus 13 is equals to 0. This is important conclusion we got. अब स्टूडेंट मैं आपसे पूछता हूं कि हमने ये स्क्वायरिंग क्यों किया होगा. सो अर्लियर I was making you surprised about that, how why we are making it squaring both side. हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड क्यों कर रहे हैं, वो मैंने स्टार्टिंग में जब किया तभी मैं आपसे पूछ रहा था, तो उसका आंसर अभी आपको मिलना चाहिए. What is the purpose behind squaring both sides after this particular step? ठीक है, और मैंने वो स्टेप लाने के बाद ही स्क्वायरिंग किया, उसका भी एक इंपॉर्टेंस रहा है. कौन से स्टेप लाने के बाद मैंने स्क्वायर किया होगा, तो मैंने उस स्टेप में आपको एक्सप्लेन किया था कि रियल टर्म्स को एक साइड ले लो और इमेजिनरी टर्म को दूसरी साइड ले लो. ये मेरा लास्ट स्टेटमेंट था बिफोर आई स्क्वायर्ड बोथ साइड्स. Now let us look at the last conclusion, कि जिसमें मैंने स्क्वायरिंग को सॉल्व करके ये कंक्लूजन जो लाया, in that what you are noticing that imaginary number is eliminated. Imaginary number is eliminated. देख लो ना, लास्ट में आपके पास जो कंक्लूजन बचा है उसमें कोई इमेजिनरी टर्म बचा नहीं है, और इसको हम नंबर 1 कंसीडर कर रहे हैं. इसको हम नंबर 1 कंसीडर करेंगे. अब मेरे सॉल्यूशन का नेक्स्ट स्टेप, मुझे नेक्स्ट क्या करना है. नेक्स्ट वी हैव टू परफॉर्म डिविजन. सो डिवाइड, चलो हमें क्या फाइंड करना था क्वेश्चन में, देखो तो किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी. यहाँ मैंने क्वेश्चन मार्क करके रखा था, देख लो, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 46, इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी थी. डिवाइड एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 46 बाय, किससे डिवाइड करना है स्टूडेंट, बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13. ये जो हमने कंक्लूजन लाया ना, इसके लेफ्ट हैंड साइड का जो एक्सप्रेशन है उससे हम डिवाइड करेंगे. इज इक्वल्स टू 0, वो तो हमारा यहाँ कंक्लूजन आया है, बट ओनली यू हैव टू टेक लेफ्ट हैंड साइड.
दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13, इससे हमको डिवाइड करना है। तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 46 जो क्वेश्चन में हमको फाइंड आउट करना है उसको हम इससे डिवाइड कर रहे हैं। Are you getting, students? So now the process of division you need to understand, because यहाँ जो पॉलिनोमियल है उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, क्वाड्रेटिक के पैटर्न के एक्सप्रेशन से हम डिवाइड कर रहे हैं। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड, और ये आपने स्कूल लेवल में भी इस तरह का डिविजन परफॉर्म किया है। लेट अस हैव प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग वंस अगेन। सो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 46 dividing with x square minus 4x plus 13। स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंटली पे अटेंशन, ये हमारा जो अब कैलकुलेशन या जो प्रोसीजर हो रहा है वी नीड टू अंडरस्टैंड क्लियरली। अब स्टूडेंट्स पहले मुझे ये देखना है कि मेरे पास जो फर्स्ट टर्म अवेलेबल है एक्स स्क्वायर, उसके साथ में यहां कौन सा टर्म मल्टीप्लाई में रखूं ताकि मुझे यहां एक्स क्यूब का ऑब्जर्वेशन मिल सके, एक्स क्यूब का एक्सप्रेशन मिल सके। तो सीधी बात है, एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई करोगे? ओनली वन एक्स, सो एज एक्स स्क्वायर इंटू एक्स is going to become x cube. And now not only with this on x square I have to multiply, but whole expression I have to multiply by x. So what exact outcome will be there? x into first क्या है मेरे पास? x square, that is x cube minus 4x multiplied by x, that is going to be minus 4x square plus 13 multiplied by x plus 13x। समझ में आया स्टूडेंट? क्या किया? जो एक्सप्रेशन मैंने डिसाइड किया x, उसको पूरे ही एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13 उससे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, अभी एक दो बात आपको यहां मैं क्लियर कर देता हूं जो कि आपको मालूम ही होगा। जो यहां जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं ये पूरा एक्सप्रेशन, दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज डिविडेंड। दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज डिविडेंड। जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं पूरा एक्सप्रेशन जो है, दिस कंप्लीट एक्सप्रेशन इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज डिवाइजर। ये सब आपको टर्म मालूम होने चाहिए स्टूडेंट्स, और इसका भी उपयोग आगे हमको आने वाला है। सो बी प्रिपेयर्ड अबाउट दिस। तो हम जिससे डिवाइड कर रहे हैं डिवाइजर, उसको ये एक्स से पूरे से हमने मल्टीप्लाई कर देना है, पूरे एक्स से हमको मल्टीप्लाई कर देना है। एंड सो एज नाउ अवर स्पेसिफिकली जो हमें इसका रिजल्ट देखना है, इन दैट वी हैव टू चेंज द साइन, सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस प्लस माइनस। So minus x cube plus x cube is going to be cancelled. Minus x square plus 4x square, it's going to be 3x square. It's going to be 3x square. And plus x minus 13x, it will be minus 12x. Or further plus 46 I will carry for the next कैलकुलेशन। तो अभी प्रोसीजर वापस से हमें फॉलो करनी है। अब मुझे बताइए स्टूडेंट, अब फिलहाल मेरे पास जो यहां फर्स्ट टर्म x 3x स्क्वायर का अवेलेबल है, और मेरे डिवाइजर के अंदर फर्स्ट टर्म
एक्स स्क्वायर जो है उसके साथ मुझे इक्वल बनाना है तो मुझे 3 की जरूरत है। मतलब मुझे +3 से ये पूरे डिवाइजर के टर्म्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो दैट फर्स्ट टर्म 3x square, to bring this 3x square I can easily have that first term 3 into x square as a 3x square. So again ये 3 को पूरे डिवाइजर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे हम। So +3 I have taken in this particular step. So 3 into x square, this is 3x square, minus 4x plus 3 minus 12x plus 13x into 3, that is 13 into 3 plus 39. And finally I need to subtract, so sign change करेंगे, and this 3x square minus 3x square is going to be cancelled, minus 12x plus 12x is also cancelled. Remainder क्या बचेगा? 46 minus 39, that is going to be +7. And now here we have completed our division process as we got 7 as a final remainder. And importantly, the proper answer जो इसका हम बोलते हैं, that x plus 3 what we got, which we call it as quotient. ये सब आपको मालूम होना चाहिए. So which particular parts we have to now recognize from this whole division process? That first जिसको हमने डिवाइड किया है that is going to be your dividend. जिससे हमने डिवाइड किया है that is going to be your divisor. Whatever the answer we got, that is what your quotient, that is x plus 3. And lastly the remainder, that is remaining part, we used to say as a remainder. So all these 4 parts are very important now to see the next step. Now what we are going to do, we have particular one formula, and that particular formula as also is importantly required here with the help of these 4 terms: divisor, quotient, dividend and remainder. And as you know, in school sections these all things you have already gone through. So now that particular formula also for you people is not difficult. What is the formula that I am going to write? That is dividend is equals to divisor into quotient, उसको ब्रैकेट में लिखना है, प्लस रिमाइंडर. This is what you have already understood in the school section, but now you have to apply in this particular formula. So what is our actually dividend जिसका हमको वैल्यू फाइंड करने का था स्टूडेंट, ये है ना हमारा x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 46, यही तो है हमारा डिविडेंड. और वही डिविडेंड तो हमको यहाँ पे अभी फाइंड आउट करना है. तो व्हाट इज दैट डिविडेंड जिसका हमें वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन में भी बोला है दैट वी नीड टू राइट एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 46. दिस इज इक्वल्स टू व्हाट इज डिवाइजर जिससे हमने डिवाइड किया है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13. इसको मल्टीप्लाई करना है क्वोशंट के साथ. व्हाट इज द क्वोशंट पार्ट? दैट आंसर वी गॉट फाइनली x प्लस 3, और इसे रिमाइंडर से हमको ऐड कर देना है. फाइनली रिमाइंडर इज 7. So this is what systematically we are now implementing in that formula after having that division procedure. And with that, in this particular formula we have substitute
all this information, and now only right hand side will give the final answer of your left hand side dividend, what exactly you have to find. In the question also आपको बोला था कि आपको ये x cube minus x square plus x plus 46 का वैल्यू फाइंड आउट करना है, and for that this particular formula we have used, and to use this particular formula we need to obtain divisor, quotient and remainder, and for that purpose we have executed this particular division procedure, and therefore this method is used. So altogether now is a conclusion we have to bring. The last part we are solving now. Very importantly, स्टूडेंट अब मैं ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13 इसके जगह पे क्या लिखने वाला हूं, आप जरा ध्यान से नोटिस करिए. अर्लियर हमने यहाँ देखो कॉम्प्लेक्स नंबर जो दिया था उसको हमने स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करके ये प्रोसेस को हमने फॉलो करके इसको नंबर 1 करके रखा था, याद आया? ये रहा हमारे पास स्टेटमेंट. तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13, this particular expression is equals to 0. So from 1 I can write this as 0. 0 into x plus 3 plus 7, and now 0 into anything is going to be 0, plus 7 is going to be 7. So hence my final answer of x cube minus x square plus x plus 46 is equals to 7, and therefore we got that particular required answer about what they have asked to find for x cube minus x square plus x plus 46. इसका वैल्यू आप फाइंड आउट कीजिए. ये हमें जो बोला था वो हमने फाइंड कर लिया. So this is what particular type of question what we have solved. मैंने इसको बहुत ही slowly आपको explain किया ताकि you can have proper idea about each and every small steps and our requirement, so that next question onwards you can also do it by yourself. So just to make a step by step rules कि पहले हमें क्या करना है, बाद में हमने क्या किया, और उस हिसाब से जो आप आगे बढ़ेंगे तो you can bring proper solution of this type of question. So now taking next particular question, 9th का जो second question है, that again instruction in the 9th question is same as find the value of. So find the value of two x cube minus 11x square plus 44x plus 27 if x equals to 25 upon 3 minus 4i. Okay, now importantly again need to understand कि भाई हमें जो x की वैल्यू अवेलेबल की है दिस, वो जो इसके पहले वाले क्वेश्चन में x की वैल्यू अवेलेबल की थी उसके जैसी नहीं है. लाइक थोड़ा बहुत जो डिफरेंस है मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि आपको ये नोटिस होने चाहिए पॉइंट्स. तो जो x की वैल्यू यहां दी है और इन अर्लियर क्वेश्चन द x वैल्यू वाज गिवन, there is a difference. In earlier question the x value was given as in the form of a plus bi. इसी मैंने बताया भी था यहाँ पे ऊपर लिख के a plus bi. And now in this question this particular x value is not in the form of a plus bi. So very first and important work is to convert this RHS जो x के लिए वैल्यू अवेलेबल किया है in terms of a plus bi,
And to convert in the a plus bi form, as you know, this 25 upon 3 minus 4i, 3 minus 4i डिवीजन में है, डिनोमिनेटर में है, इसका मतलब है डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कंसेप्ट था उसको हमें फॉलो करना है। और उसमें हमने डिवीजन के प्रोसीजर के हिसाब से क्या करने के लिए बात समझी है, okay, whenever we have to divide by any complex number, then the division process is to be carried by multiplying and dividing with its denominator conjugate. So now we will start with that only. Given x value as 25 upon 3 minus 4i, and now this particular right hand side 25 upon 3 minus 4i, जो डिनोमिनेटर में है ना 3 minus 4i, स्टूडेंट उसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा 3 plus 4i, वो 3 plus 4i से मैं मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा 3 plus 4i upon 3 plus 4i, and that means न्यूमरेटर न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, so it becomes 25 into this 3 plus 4i. I am going directly 25 into 3, 75 plus 25 into 4i, 100i upon, नीचे डिनोमिनेटर में 3 minus 4i, 3 plus 4i, a plus b, a minus b का फॉर्मेट है, so it is going to be 3 square minus 4i whole square. Now further this becomes x is equals to 75 plus 100i upon 9 minus 4i square, that means 16i square, 4i whole square, that is 16i square, and that means this x value 75 plus 100i upon 9 minus 16 into i square के जगह पे -1, 75 plus 100i upon 9 plus 16, therefore x is equals to 75 plus 100i whole upon 9 plus 16, 25, and therefore x is equals to, अच्छा ऊपर न्यूमरेटर में मैंने 75 plus 100i में से can I take 25 common? So 3 plus 4i is remaining in the bracket, and 25 which is in the denominator is going to be cancelled, and hence I am going to reach at the conclusion that x value as 3 plus 4i. अब सुन इसको नोटिस करो, ये आपको x की वैल्यू जो मिली वो a plus bi के फॉर्म में मिल गई कि नहीं मिल गई? अच्छा, इसी कंक्लूजन को जो मैं लाया हूं वही चीज आपको फर्स्ट क्वेश्चन में डायरेक्टली मिल रही थी, देख लो व्हाट वाज द गिवन पार्ट एज x का वैल्यू जो दिया था क्वेश्चन में, in question itself they had given x value is in the form of a plus bi, so in that we don't have to convert in the a plus bi form because it was already in the form of a plus bi. So now in this second question what is the extra part you have done? तो के जो पहले से x की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी थी, it was not in the form of a plus bi, first we brought in this a plus bi form. Now जो ये x की वैल्यू 3 plus 4i है, इसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं आगे स्क्वेयरिंग। अच्छा, उसमें मेरे को रियल टर्म बाद में मैंने क्या किया था, एक साथ सब रियल टर्म्स रखेंगे और इमेजिनरी टर्म दूसरे साइड एक साथ रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे रियल टर्म है x minus 3, राइट हैंड साइड में खाली इमेजिनरी टर्म 4i. नाउ वी विल डू स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, और हमारा इंटेंशन क्या है स्क्वायर करने के पीछे का, क्योंकि जो इमेजिनरी टर्म है उसको हमें हटाना है, एंड दैट इज व्हाट x minus 3 whole square is equal to 4i whole square, and therefore
this is going to be x square minus 6x plus 9 is equals to 16I square. Therefore, it will be x square minus 6x plus 9. Right hand side में 16 I square में I square की जगह पे minus 1, and therefore x square minus 6x plus 9 is equals to minus 16, and therefore x square minus 6x plus 9 plus 16 is equals to 0. Therefore, x square minus 6x plus 25 is equals to 0. This is going to be number 1. देखो स्टूडेंट, तो ऐसा हमने कंक्लूजन लास्ट क्वेश्चन में भी लाया था, लेकिन लास्ट क्वेश्चन इमीडिएटली वो ये कंक्लूजन पे हम आज आ सके थे क्योंकि उसमें जो x की वैल्यू दी थी ऑलरेडी a प्लस बी आई के फॉर्म में दी थी. यहाँ पे हमको a प्लस बी आई के फॉर्म में लाना पड़ा, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड करके ये कंक्लूजन पे हमको आना पड़ा. तो लिटिल बिट टाइम कंज्यूमिंग. नाउ हमें जो रिक्वायर्ड आंसर फाइंड करना है, किसका फाइंड करना है? तो जो है 2x क्यूब माइनस 11x स्क्वायर प्लस 44x प्लस 27, इसको हमें डिवाइड करना है. तो डिवाइड 2x क्यूब माइनस 11x स्क्वायर प्लस 44x प्लस 27 बाय ये जो फर्स्ट हमने स्टेटमेंट ढूंढा उसके लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड के एक्सप्रेशन से, सर एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 25, इससे हम डिवाइड कर देना. सो नाउ वी आर शोइंग डिवीजन प्रोसीजर वंस अगेन. प्रॉपर्ली पे अटेंशन, डिवीजन के प्रोसेस को हम फॉलो करेंगे. इट इज गोइंग टू बी 2x क्यूब माइनस 11x स्क्वायर प्लस 44x प्लस 27 x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 25. अब स्टूडेंट मुझे बताइए, पहला टर्म जो मुझे अवेलेबल है डिविडेंड में 2x क्यूब, और मेरा यहाँ पहला टर्म जो अवेलेबल है डिवाइजर का, दैट इज एक्स स्क्वायर. सो व्हाट इज एग्जैक्टली रिक्वायर्ड टू मेक इट 2x क्यूब? क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ मुझे क्या चाहिए? क्योंकि एक तो x चाहिए एक और 2 भी चाहिए. So when I multiply 2x with x square, it will become 2x cube, yes or no? So now this is decided that this 2x is to be multiplied with whole expression of this divisor. So now this becomes 2x into x square, that is 2x cube minus 6x into 2x, that is 12x square plus 25 into 2x, that is 50x. साइन चेंज करेंगे. This 2x cube is going to be cancelled. Minus 11x square plus 12x square. This is only one time x square, positive x square remains, and plus 44x minus 50x. That is going to be minus 6x. Minus 6x. And now I'll carry this 27 plus 27. Now look at the first term, x square, and you have x square itself as the first term, the divisor. So you need to multiply with only 1 because there is no need as such, because same term is there. So plus 1 is required. So when I multiply this plus 1 with whole divisor part, and that will going to be same because 1 से multiply करेंगे तो same आंसर मिलता है. So it is same, x square minus 6x plus 25 is going to come, and now I'll change the sign, and this is going to be cancelled. Minus 6x plus 6x is also cancelled. This now remaining 27 minus 25, this is going to be as a remainder, we got 2 plus 2. So now this is confirmed that this particular part, you know what it is going to be called as?
dividend. What is this part we used to say? Divisor. What is this part we got as a quotient? And what is this part we got? 2 as a remainder. And now we'll apply that particular formula. What is that? Dividend is equals to divisor multiplied by quotient plus remainder plus remainder. तो व्हाट इज द डिविडेंड? इसका हमें एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करना है। 2x³ माइनस 11x स्क्वायर प्लस 44x प्लस 27 इज इक्वल्स टू व्हाट इज डिवाइजर? दैट इज x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 25 into what is quotient? That is 2x plus 1. 2x plus 1 plus what is remainder? Plus 2. अच्छा, अब मेरे को राइट हैंड साइड में जो ये एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 25 इसका आंसर डिवाइजर जो है उसका आंसर मैंने इज इक्वल टू 0 प्लस ये इज इक्वल टू 0 स्टेटमेंट नंबर 1 में मैंने कंसीडर करके रखा था। दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज इक्वल टू 0 मैं यहाँ रख दूंगा 0 into this 2x plus 1 plus 2। यहाँ लिखना तो लिख सकते फ्रॉम 1, मतलब ये जो 0 आंसर हमने रखा है इसका किसमें से आया? ये आगे हमने उसको इक्वल टू 0 प्रूव करके रखा हुआ है ना स्टेटमेंट नंबर 1 में, इसलिए यहाँ लिखा है फ्रॉम 1। एंड नाउ दिस इज 0 into anything is going to be 0 plus 2 which is definitely going to be 2, and this is what the conclusion about this particular क्वेश्चन कि जो हमें इसका वैल्यू ढूंढना था जो हमने उसका वैल्यू एज अ 2 फाइंड कर लिया। So this is what the two questions they have given where this method is to be used, that dividend is equal to divisor into quotient plus remainder, and to use this particular method we need to identify the values of divisor, quotient, remainder, and for that purpose we have to perform this division process. And to get this division process we need the divisor. That divisor we have to obtain importantly this way with the help of given value of x from the question। जैसे कि क्वेश्चन में ये x की वैल्यू दी हुई है उसमें से ये वैल्यू जनरेट करके, और उसकी वैल्यू कैसे जनरेट कर रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट था। पहले तो x की वैल्यू आपको जो दी है क्वेश्चन में वो a प्लस बी आई के फॉर्म में होनी चाहिए। इफ इट इज देयर इन a प्लस बी आई फॉर्म देन इट्स ओके। फिर रियल पार्ट्स एक साइड, रियल टर्म्स एक साइड और इमेजिनरी टर्म एक साइड करके स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करके आगे आप इमेजिनरी टर्म को क्या करना है? एलिमिनेट कर देना है। बट इफ दिस x which is given in the question which is not in the form of a plus bi, and first you have to bring in the a plus bi form and then you have to carry the further procedure। तो पहले क्वेश्चन में हमने देखा वो x का वैल्यू जो आपको दिया हुआ था वो a प्लस बी आई के फॉर्म में दिया हुआ था, whereas in the second question x का वैल्यू आपको a प्लस बी आई के फॉर्म में नहीं दिया गया है। Are you getting? So this is what complete process which we have obtained, and for a practice sake student मुझे एक एडिशनल क्वेश्चन आपसे डिस्कस करना है। आई एम गोइंग टू टेक एक्स्ट्रा क्वेश्चन और उसमें भी मैं कुछ नई बात आपको बताने जाऊंगा विच इज गोइंग टू मेक यू लिटिल बिट सरप्राइज, बिकॉज ये दोनों क्वेश्चन जो हमने किए हैं ना उसमें वो पॉइंट नहीं आया है जो मुझे बताना है, एंड दैट पर्टिकुलर पॉइंट आई वुड लाइक टू डिस्कस बाय टेकिंग वन एग्जांपल which is importantly essential to discuss, and that type of question is not given in the textbook, government textbook. So let me give you extra question with that I can
explain that point. This is of the type of ninth question. नाइन्थ क्वेश्चन जो है उस टाइप का क्वेश्चन है, ये आप ध्यान में रखना। ये मैंने क्लियरली लिखा है सो दैट यू कैन ऑल्सो मेंशन। ये टाइप के क्वेश्चन का मेरे को ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन देना है। टेक डाउन and what the unique thing you will find in this question that you can notice when gradually we will start solving, in that process only you will notice, you will come to know हाँ ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट था जो हमें इसके अलावा समझना जरूरी है। जो ऐसा सिचुएशन आ जाएगा तो क्या करेंगे। So for that purpose I am taking this question. Take down. Question is find the value of x raised to 4 minus 5x cube plus 12x square minus 13x plus 7, where x is equals to 1 minus I. Are getting? क्वेश्चन तो जैसा है वैसा ही लगना है, बट when you start solving it and in between you will feel that somewhere we are finding some different things as a okay fine. प्रोसेस क्या है स्टूडेंट्स, जो x की वैल्यू दी है इज इट इन द a प्लस बी आई फॉर्म, तो हाँ a प्लस बी आई के फॉर्म में है, तो भाई गाड़ी आगे बढ़ाइए। इन द सॉल्यूशन पार्ट given x value as 1 minus I, therefore अब हम रियल टर्म्स को एक साथ और इमेजिनरी को एक दूसरे साथ रख के दूसरे साइड में रख के स्क्वायरिंग करेंगे। x minus 1 is equals to minus I, therefore now squaring on both sides, x minus 1 whole square is equal to minus I whole square. Then this whole square you have to expand, that will be x square minus 2x plus 1 is equals to minus का square plus होता है और I square, so this is going to be I square only. This is x square minus 2x plus 1 is equal to I square का वैल्यू है minus 1, therefore x square minus 2x plus 1, ये minus 1 को इस तरफ ले लो, it will be plus 1 is equal to 0. x square minus 2x plus 2 is equal to 0. इसको हम नंबर 1 करके छोड़ेंगे, इसको हम नंबर 1 करके छोड़ेंगे। And this conclusion, after getting this conclusion, आपको मालूम है हमें जिसका वैल्यू फाइंड करना है उसको इसके लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड कर देना है। So now divide. What is actually to be find? X raised to 4 minus 5x cube, x raised to 4 minus 5x cube plus 12x square plus 12x square minus 13x plus 7 by x square minus 2x plus 2. ठीक है, so now again the same procedure I am starting of division. Pay attention. So x raised to 4
x raised to 4 minus 5x cube plus 12x square minus 13x plus 7, उसको हमें डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 से। पहला टर्म क्या है, x raised to 4. Here I have first term is x square, so you need to multiply with x square so that it becomes x raised to 4, and completely you have to multiply with x square, so x square into x square, x raised to 4 minus 2x into x square minus 2x cube plus 2 into x square plus 2x square. Change the sign. This is cancelled. Minus 5x cube plus 2x cube, that is going to be minus 3x cube, and plus 12x square minus 2x square, this is going to be plus 10x square. Next value यहाँ कैरी कर लीजिए, माइनस 13x प्लस 7। इंपॉर्टेंटली अब हमें देखना है ये माइनस 3x क्यूब का जो टर्म है वो हमें लाना है। तो मुझे ये फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर है उसके साथ क्या मल्टीप्लाई करना जरूरी है। एंड रिमेंबर पहली बार यहाँ ये देखो माइनस आया है, तो यहाँ जब पहले टर्म में माइनस है तो हमें जो टर्म नया इंट्रोड्यूस करना है दैट इज ऑल्सो टू बी टेकन इन माइनस। तो माइनस पक्का है, बट विच टर्म आई शुड टेक to make it 3x cube? I have x square, only one x is required and 3 required, so minus 3x is enough to make it minus 3x cube. You have to confirm also after making writing that number that term, that 3 minus 3x into x square, it is going to be minus 3x cube. Surely ये हो जाता है। So now completely उसको multiply करके लेना है, so it becomes minus 3x cube minus 2x into minus 3x, that is going to be plus 6x square and plus 2 into minus 3x, that is going to be minus 6x. Students, change the sign. Minus 3x cube plus 3x cube cancelled. 10x square minus 6x square, this is going to be 4x square minus 13x plus 6x, that is minus 7x, and now ये 7 को कैरी करेंगे plus 7. So this is what I got this particular step. देखो प्रोसेस फॉलो करने का जो तरीका है वो वही है। हाँ, तो अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। Now we require 4x square and here I have first term as x square, so only 4 is required, plus 4 से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। So plus 4 if I multiply with all the terms, I am going to get 4x square minus 4 into 2, this is going to be 8x plus 8. Change the sign. This 4x square cancelled. Minus 7x plus 8x plus x plus 7 minus 8 minus 1. अब स्टूडेंट ये जो रिमाइनिंग हमको मिला है उसमें अब आपके पास यहाँ है x. टू गेट दिस x, यहाँ मेरे पास एक्स स्क्वायर पे क्या मल्टीप्लाई में करूं कि मुझे x मिलेगा। I can't have any particular term कि वहां मल्टीपल में लाने से या मैं कुछ और मल्टीप्लिकेशन में लाऊं इसके साथ आगे तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाए तो वो एक्स मिलता है, पॉसिबल नहीं है। सो हियर व्हाट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज कमिंग, दैट एज कंपेयर टू द अर्लियर क्वेश्चन इन द टेक्सचुअल क्वेश्चन व्हिच वी हैव डन, लास्ट में रिमाइंडर के तौर पे वो कांस्टेंट एक अकेला बच जाता था, मगर this is a uniquely you can see now this x is also remaining as a remainder which is a variable, and this variable x इसका हमें कुछ बंदोबस्त करना पड़ना है।
मगर आप आगे तो यहाँ किसी से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो दिस इज गोइंग टू बी टोटली अवॉइडेड। जो मैं खाली आपके साथ बात करके ले रहा था कि भाई आगे कुछ पॉसिबल होता है क्या, कि आगे कुछ पॉसिबल नहीं। तो अब मैं वो फॉर्मूला में तो इसको सब्स्टिट्यूट कर ही दूंगा। एज यू नो दिस इज अवर क्वोशंट, दिस इज अवर पर्टिकुलर पार्ट, जो है अपने जो है लिख लीजिए आपके जो पार्ट्स हैं। नेक्स्ट इज दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज dividend, this is what we call as divisor, and this is completely we call it as remainder. Now in the formula that we have to substitute, what is that formula? Dividend is equals to divisor multiplied by quotient plus remainder. और ये आप अब सब्स्टिट्यूट करोगे तो व्हाट इज आवर डिविडेंड पार्ट? x raised to 4 minus 5x cube plus 12x square minus 13x plus 7 is equal to, what is the divisor? That is x square minus 2x plus 2. What is quotient? Quotient we got as x square minus 3x plus 4. X square minus 3x plus 4. What is remainder? Plus remainder x minus 1. And similarly, as you know, this x square minus 2x plus 2 is equal to 0. तो इसके जगह पे तो मैं 0 रख दूंगा। This is 0 and 0 multiply with any particular expression or value, that is also going to become 0. Rest things all as it is. ऐसे 0 हो गया और यहाँ पे प्लस x माइनस 1, इसके हिसाब से सिर्फ बचेगा x माइनस 1। अब x माइनस 1 में दिक्कत यही है, मैंने जो रिमाइंडर में ये x माइनस 1 के टाइम यहाँ पे वेरिएबल मेंशन करके बताया आपको कि ये वेरिएबल बच रहा है, दिस इज टू बी रिप्लेस्ड। हियर इज द पॉइंट। नाउ हाउ टू ब्रिंग अ स्पेसिफिक आंसर बाय अवॉइडिंग x, यही मेन मुद्दा आपके सामने मुझे ये क्वेश्चन लेके समझ आना है कि ये इसलिए यूनिकली आपके लिए ये क्वेश्चन में ये पॉइंट है जो समझना जरूरी है। नाउ हाउ टू गेट रिड ऑफ दिस x, कैसे इसको हम रिप्लेस करेंगे? स्टूडेंट आइए स्टार्टिंग में क्वेश्चन में आइए। आपको x का वैल्यू क्या दिया है? दिया है कि नहीं? इसको आप गिवन है जो उसको आप नंबर सेकंड मार्क करके ले लो, ठीक है। और x के जगह पे ये जो 1 माइनस आई है वो रिप्लेस कर दो 1 माइनस आई। नाउ दिस x is to be replaced as 1 minus I, minus 1 as it is। क्या से आया ये? फ्रॉम सेकेंड। एक्चुअली सेकेंड तो हमने नंबर दिया, बाकी वो चीज गिवन ही थी ना क्वेश्चन में। x की वैल्यू जो दी थी शुरुआत में क्वेश्चन में, वही तो हमने रिप्लेस करी है। मैं लिख भी देता हूं, दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज x is equals to 1 minus I।
आपको हिंट मिले इसलिए मैंने लिख के रखा है. एंड फाइनली इट विल बी गोइंग टू बी 1 minus I minus 1. 1 is going to be cancelled, minus I is remaining. That is what your ultimate answer. तो स्टूडेंट बोलने का मतलब ये है कि यहां किसी ने आंसर छोड़ दिया तो ये इनकम्प्लीट है. हमें इमेजिनरी टर्म के कॉन्टेक्स्ट में उसको लाना था ताकि ये हमने रिप्लेस x की वैल्यू को 1 माइनस आई जो क्वेश्चन में दिया है उसका हमने यहां सब्स्टिट्यूशन कर दिया. यू गॉट दिस पर्टिकुलर पॉइंट. दिस इज इंपॉर्टेंट. एंड एडिशनली ये करना पड़ा. ये कभी करना पड़ा जब यहां पे हमारे पास जो आंसर में x का टर्म बच गया है इन दैट कॉन्टेक्स्ट. बाकी आप टेक्स्ट बुक के दोनों क्वेश्चन को देख लीजिए. वहां रिमाइंडर आपको जो बचता है ना उसमें कोई x का टर्म बचता नहीं है. प्लीज प्रॉपरली ऑब्जर्व. एंड देयरफॉर आई हैव टेकन दिस पर्टिकुलर एडिशनल क्वेश्चन टू मेक यू अवेयर अबाउट दिस स्पेसिफिक पॉइंट which is very important. So student, with this I am ending up this session, the particular lecture, and in this session whatever we have done, try to understand properly, and same question, similar question, you do it by your own, as well as there are certain questions given in the solved examples, you try to solve by your own. बहुत ही properly समझ के करना, आराम से आंसर आना है. Fine friends, so that in the next session I will continue with some more concepts in the complex number which is related to next exercise. Thank you friends.